Welcome back to the third video in this series, Jealousy at Workplace. पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा कि if I am somebody who is feeling jealous about my co-worker, how do I handle this emotion? दूसरे वीडियो में हमने टॉपिक एक्सप्लोर करा कि if I have achieved something and people are now getting jealous at me, how do I handle this? इस वीडियो में हम एक अलग सिनेरियो डिस्कस करेंगे, which is where we'll say that if I am a manager or a leader and I have a team एंड उस टीम में मैं सेंस कर रहा हूँ कि देयर कुड बी पीपल हु आर जेलस ऑफ ईच अदर, तो इस सिनेरियो को कैसे हैंडल करें एज ए मैनेजर और एज ए लीडर। क्या आप स्टेप्स ले सकते हो जिससे आप मिनिमाइज कर सको जेलसी को। पूरा जेलसी को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन व्हाट कैन यू डू टू मिनिमाइज दिस नेगेटिव इमोशन एट वर्क। बने रहिए वीडियो में ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। As a manager, as a leader, you might notice that there could be a star performer in the team, और सब लोग जो हैं वो स्टार परफॉर्मर की तरफ जेलस हो रहे हैं क्योंकि स्टार परफॉर्मर को एक के बाद एक रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलता जा रहा है। तो बाकी लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग लेफ्ट आउट, वी आर नॉट बीइंग आस्क्ड फॉर। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रमोट करती हैं, एंड इस नेगेटिव एनवायरनमेंट का आउटकम ये होता है कि द टीम बिकम्स वेरी अनप्रोडक्टिव एंड वेरी अनडायरेक्टेड। एज अ लीडर और एज अ मैनेजर यू वुड नॉट लाइक दैट। if you are worth your value, you should never like this kind of a situation in your team, and you should do everything possible in your control to basically manage this situation. तो कैसे करें? if you are a leader or a manager and if you are confronting this kind of situation, तो कैसे करें? Let me share some tips and tricks with you that you can employ or you can deploy at work to basically create that environment with positivity, where jealousy can be an instrument for inspiration rather than an instrument for negativity. पहला step, create a positive environment. Now what do I mean by this? बहुत सारे टीम में ऐसे होता है जो मैंने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि दी मैनेजर कीप्स ऑन एनकरेजिंग द स्टार परफॉर्मर। मत कीजिए। एनकरेज टीम वर्क, एनकरेज कोलैबोरेशन, डिस्करेज द सिंगल हीरोइज्म और सिंगल वन मैनशिप। इन सब क्वालिटीज को डिस्करेज कीजिए। when you don't reward these qualities, when you openly promote team culture, when you openly promote collaboration, that's when you create an environment जहाँ पे everybody feels valued. सबको लगता है कि सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप एक स्टार प्लेयर को ही आप हमेशा प्रेज करते रहोगे, देन द होल टीम विल फील कि बस हम भी काम कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो रिकॉग्निशन फॉर इट, सिर्फ स्टार प्लेयर को मिल रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट एंड प्रमोट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट थ्रू collaboration, through encouraging teamwork and reducing your praise for single manship or for heroisms in all possible forms. You also need to take efforts to recognize team people. You should not focus all your recognition to just one person or two people or three people. Take time and take turns to appreciate and recognize everyone's effort. बहुत इंपॉर्टेंट है, so that the team values, every member in the team feels valued and recognized. Number 2, be a equal opportunity leader or a manager. Now what do I mean by this? I have also seen in my corporate career many times managers or leaders, they tend to prefer one or two or maybe a set of people, and they tend to send all the opportunities their way. नया ट्रेनिंग है, कोई अच्छा सा कोविडेड ट्रेनिंग है, कोई पेड ट्रेनिंग है, दीज आर द पीपल हु विल गेट नॉमिनेटेड फॉर इट। कुछ अच्छा कुछ नया टेक्नोलॉजी पे काम करना है, कुछ POC करना है, अगेन दीज सेट ऑफ पीपल विल बी द वंस हु विल बी पुट ऑन टू द टास्क। डोंट डू दिस, बिकॉज व्हेन यू डू दिस यू आर नॉट क्रिएटिंग और यू नॉट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। सबके लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान सोचिए, सबके लिए अपने हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान सोचिए। Make an equitable distribution of this training and development opportunities. Suppose somebody is lagging behind, तो उसको आप आगे लाइए, उसके लिए ट्रेनिंग प्लान कीजिए, give him that opportunity so that वो भी अपना गेम लेवल अप कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपके टीम के लिए you have to provide them with clarity about their growth. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आज इस रैंक पे ज्वाइन किया एंड आई डोंट नो व्हाट माय नेक्स्ट रैंक वुड बी एंड आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी हाउ माय करियर इज गोइंग टू प्रोग्रेस। देयर शुड नॉट बी हेजी एरियाज। I understand that it may be possible that you yourself do not have that as a manager or a leader,
but at least make an effort, keep communicate. It's very very important to do that. तीसरा point, ensure fairness. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है. द मिनट anybody gets promoted or gets a rise, gets a hike, this whole idea of fairness is always challenged. So it's very important that you establish clear cut guidelines in terms of who gets a promotion, what is the criteria for a hike. All of this is very important. What is the criteria for getting into that particular training or creating that POC? Is it by nomination? Is it by volunteering? All of these have to be made very clear, but ensure there is enough fairness and transparency in the system so that people feel that if they can up their game, they are up for the challenge and up for the chance as well. अगर ये उनको नहीं समझ में आएगी, ये गैप अगर रहेगा, so fairness नहीं रहेगा and it will lead to some sort of jealousy within the team. चौथा point, provide feedback. Don't wait till the end of the year कि ताकि कोई outshine कर सके, some becomes a star performer, and then you have the opportunity to give feedback to the laggards. Don't do that. As a leader or as a manager, you are responsible for their careers also. So it's very important that आप उनको टाइम टू टाइम फीडबैक दें, उनको इम्प्रूवमेंट प्लान बताएं, उनको स्केल अप प्लान बताएं, तो सो दैट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि एक साल के अंदर वो अपना गेम लेवल अप कर सकें. If you wait till the end of the year, then the whole year is lost. The person might not even know what's happening, and at the end of the year, as a surprise, everybody will get to know कि okay, these are the 2-3 star performers. ये तो श्योर शॉर्ट रेसिपी है एक टीम में जेलसी बिल्ड करने का. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप फीडबैक दें और फीडबैक कंसिस्टेंटली इन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कंस्ट्रक्टिव वे दें. वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड मैं ये कहूँगा कि चाहे वो आप किसी और की तरफ जेलस हो या लोग आपकी तरफ जेलस हो या आप मैनेजर हों, बेसिकली कंबाइनिंग ऑल द 3 वीडियोस टुगेदर, अगर ऐसा सीन है तो इट ऑलवेज लीड्स टू अ वेरी अनप्रोडक्टिव, अनप्रोफेशनल एंड अ वेरी नॉट सो गुड एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग काम करना पसंद नहीं करते. एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द टीम, इट्स नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द आउटपुट दैट द टीम इज सीकिंग विल नॉट बी अचीव्ड. Even if it is achieved, it will not be achieved in a meaningful way. So it's very important that as a person, as a leader, you need to understand that this journey to feeling of admiration to getting inspired to do something well in your life, it's extremely important that this journey is made. I hope you liked the video, you liked the series. If you liked so, then give it a thumbs up, like and share, and do let me know in comments what additional points you want to make and how you enjoyed the video. Thank you so much for watching. It has been a very very interesting topic to talk about. Thank you.